Hello, good morning, friends. Today is 11th of December 2023. This video is to guide the Rainbow students as well as other learners who are part of my class to what I think about the foreign exchange, what are my positions, what are my outlook. तो ये जो वीडियो है, this video will be in English, थोड़ा हिंदी, थोड़ा English, and in this video we will focus on फॉरेन एक्सचेंज, इंडियन पर्सपेक्टिव और साथ में हम लोग प्रेशियस पैक गोल्ड सिल्वर को भी देखेंगे क्योंकि वो दैट गोल्ड सिल्वर इज बेस्ट ट्रेडेड विथ फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज दे आर वेरी मच कनेक्टेड to the monetary policy and foreign exchange. So we'll go to first dollar index, and to do the analysis we'll bring our favorite indicator SD Rainbow Wave version 1 and SDRSIX. ये दो मिलके क्रिएट करेगा फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप which I use largely for trading. Dollar had a superb down move. We enjoyed the down move. If you are reading my post or watching my video, आप देख रहे हो तो मालूम है हम लोग डॉलर शॉर्ट किए थे. हम लोग एकदम बॉटम के आसपास बुक भी किए हैं, बट ऑब्वियसली आई डिड नॉट बाई टू मच इनटू दिस डॉलर स्ट्रेंथ. ज्यादा बाई नहीं किया हूं लॉन्ग डॉलर पे. डेफिनेटली मेजॉरिटी जो शॉर्ट डॉलर पोजीशन था वो स्क्वायर ऑफ कर दिया. तो कुछ शॉर्ट डॉलर पोजीशन बाकी है. वी विल डिस्कस दैट. दिस इज लार्जली. लेट्स कम टू द पेयर. डॉलर इंडेक्स अभी क्या हो रहा है? लेट्स लुक एट डॉलर इंडेक्स. रिलेटिव स्ट्रेंथ इज प्रीवियस डे, मतलब फ्राइडे से चेक हो रहा है. Dollar relative strength is up 0.9 points. Euro is seems to be the strongest in the bunch with a rising 2.5, and pound has also gone up in strength 1.1. The one which lost the strength today is the Japanese yen. After the violent move lower, Japanese yen has lost 4.1 points in its strength. Indian rupee is relative strength is in a rising mode. It has up 1.5. Obviously, our Reserve Bank का जो intervention policy है to cut down the volatility, ये इंडियन रुपी का जो डिप्रिसिएशन है या वीकनेस है उससे प्रोटेक्ट कर रहा है. आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्जली व्हाट एवर स्ट्रेंथ वी आर सीइंग इन आईएनआर. यहाँ पे गोल्ड इज इन अ फॉलिंग मोड, -2 इन रिलेटिव स्ट्रेंथ अगेंस्ट द बास्केट. Silver is marginally up, but silver relative strength also falling. As per relative strength score, silver is the weakest, followed by euro, and the strongest is Japanese yen, but lost its strength. And also US dollar is strong, which saw its strength rise. इसका strength जो है relative strength वो बड़ा है. तब डॉलर इंडेक्स तो इंडिया में बैठ के ट्रेड नहीं किया जा सकता. आउटसाइड दोज आउटसाइड कैन ट्रेड. सो वी कैन ट्रेड यूरो यूएसडी. आप जीरो था में सिंथेटिक पेयर बना सकते हैं, और यू कैन ट्रेड यूजिंग धन एंजल अकाउंट यूरो यूएसडी कॉन्ट्रैक्ट जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. काइंडली ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग वाया ऑनलाइन ब्रोकर्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग वाया ऑनलाइन ब्रोकर्स लाइक ऑक्टा एफएक्स, एफएक्सटीएम, and all the big list, they are all illegal. You can only trade national stock exchange contracts. So euro USD I shorted already. हम लोग डिस्कस किए कि I have booked majority of the position as euro USD reach this level. ये this was my first target 1.076. अभी भी वहीं पे है. Now non-farm payroll आ रहा था on Friday, so I thought in decide cutting down some of the risk here. Now एक FOMO position I have left on the short side because the market is still bearish here. So very small short FOMO or pilot position is left in Euro USD. Another reason is global Forex holiday is coming up. I'm going to holiday 22nd December onwards. So I want to also keep myself light. मुझे थोड़ा light रहना है. कुछ sure better trade मिले तो ही मैं जंप करूंगा. यहाँ पे दिख रहा है strong support 1.0733.
1.0737, 1.0695, 1.0665. So some gain can still happen, but there are a lot of strong support. This particular area 1.07 and this flat region 1.0735. These are all strong support and likely to provide support to the euro USD. यूरो यूएसडी को सपोर्ट करने वाला है और इसका जो स्ट्रेंथ है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ वो राइजिंग मोड में है, तो मैं ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट खेलना नहीं चाहता हूं यहाँ पे। जीबीपी यूएसडी भी बियरिश है, एज आप लोग देखें कि डॉलर इज ट्राइंग टू रिकवर। जीबीपी वी हैड अ गुड अप मूव, गुड राइड। Similar resistance is here, GBP, but ये जो empty line है, this empty line और the medium term trend line, ये अभी भी कई दूर है। और GBP USD में मैं पोजीशन लिया था वो डेली सिग्नल से पहले, because GBP was looking weak. Let me show you 125 minutes. 125 minutes, this breakdown, but as there were green candles coming up, I squared off completely ahead of non-farm payroll. Non-farm payroll से पहले कोई major risk मैं नहीं लेना चाहता था। और बट फिर से अब non-farm payroll is done, but इस week में भी mega events coming up. But with this signal, दो अभी तक market ripe नहीं है sell करने के लिए, background is still yellow, means short trend is neutral, but majority factors are with me. 2 are bearish, 5, 7 factors are bearish, 4 bullish and 1 neutral. So majority 12 का जो majority होता है 6, उससे ज्यादा factor मेरे साथ में है। 5 plus 1, 6 factor, यहाँ पे 5 और 6 out of the 8 momentum factor मेरे साथ में है। नाउ प्रॉब्लम इज सेल ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी जो है वो कई लो दिखा रहा है, बट ये लुक्रेटिव चांस भी एट द सेम टाइम लग रहा है। सो हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशंस, सो दैट देयर दिस इन सब सिचुएशन में ये जो फोमो या पाइलट पोजीशन है दैट हेल्प्स। So market is definitely not bullish. That part is clear. So I will be looking to take स्मॉल साइड और जिसको फोमो पोजीशन बोलते हैं, सिंस आई हैव नो पोजीशन इन जीबीपी यूएसडी में कोई पोजीशन है नहीं, सो डेफिनेटली 100 पिप्स के लिए ड्यूरिंग दिस वीकेंड मैं देख सकता हूँ जीबीपी यूएसडी माइट बी टर्निंग अराउंड द कॉर्नर। सो जीबीपी यूएसडी में शॉर्ट खेलना मेरा आउटलुक रहेगा इसमें। यूएसडी जेपीवाई लास्ट डे मैं काफी बुक किया था, काफी मतलब अराउंड 30% ऑफ माय पोजीशन, नॉट रियली काफी, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग मूव। मैंने बुक किया था फ्रॉम एक्सपीरियंस लुकिंग एट द स्पाइक। ये स्पाइक होते हैं जो रेनबो का प्रॉब्लम है, तो एनीवे ये स्पाइक में वी हैव आई हैव क्रिएटेड लास्ट डे सम प्रॉफिट 30%, और इसमें अब दिख रहा है कि शॉर्ट ट्रेंड जो है वो न्यूट्रल हो चुका है। यहाँ पे ग्रीन सॉक्स भी दिख रहे हैं, मतलब बुल बियर स्ट्रॉन्ग फाइट, प्राइस एक्शन इज न्यूट्रल। 3 और 3, 6 फैक्टर्स आर बियरिश राइट नाउ, 1 फैक्टर इज बुलिश and 5 factors are broadly neutral. So rangish market we can see, because और ये जो USD JPY है ये वेट करेगा। This is our next Bank of Japan meeting. We can expect very big move. But unless that comes up, USD JPY may go into a consolidation mode. It's refreshing. Yeah, it's done. Now let's come down to USD INR. Not my really favorite pair because of the presence of RBI. मैं इसको largely trade नहीं करता हूँ, और सच मानेंगे तो USD INR ऑप्शन आपको रेगुलर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दे सकता है, बट उसमें जो प्रीमियम मिलता है डजंट कॉम्पेंसेट फॉर एक दो दिन का जो डाउन मूव, it really takes away the money. So I prefer to trade future contracts that are available. So RBI का डिफेंस चल ही रहा है, but USD INR का फंडामेंटल is on the upside. So it's a losing battle for the RBI. RBI, Reserve Bank of India, हम लोगों को जितना भी पावरफुल लगे, it cannot change this trend in the foreign exchange market.
Foreign exchange are very much dependent on fundamental. So INR fundamental is bearish. So USD INR is going up. But RBI ka defense make this a very rangish move. So USD INR, I use it to create synthetic cross rather than direct trading USD INR. JPY INR में आउटलुक देखते हैं. JPY INR has given very good move. Look at the move, but now we are seeing some red caps. So these red caps, it's asking us to book some profit, take some money home. So that's the idea, taking some money home ahead of ये जो बड़े events आ रहे हैं, data आ रहे हैं. कल है US का inflation, Wednesday US Federal Reserve और ये central bank का meeting, Thursday Bank of England का meeting, Thursday European Central Bank का meeting. So there are a lot of big events coming up. So whenever a market is suggesting me to take away some money home, अगर आप मेरे पोस्ट देखेंगे, आई एम गोइंग लॉन्ग सिंस 20th of November. Let's look at 20th of November. This is where 20th of November, 20th here. यहाँ से मैं लॉन्ग कर रहा हूँ. यू कैन चेक माई ट्विटर पोस्ट और सोशल पोस्ट. सो आई एम वेरी मच डीप इन द मनी. So I will take some money home in this case. I'll not be looking for adding additional long position in JPY INR. I will give the next price alert. मैं मार्केट खुलते ही जंप नहीं करूंगा. आई विल लुक एट हाउ इट्स गोइंग. बट ये रहेगा आउटलुक, थोड़ा प्रॉफिट घर लेके जाना है. जो 30% मैंने बुक किया था इस दिन, तो उसको बढ़ा के अब 60-70 पे लाना है. बट आई विल कीप सम लॉन्ग पोजिशन स्टिल. The market is broadly bullish. To keep my mindset clear, I will remain on the bull side. और एक अच्छी बात है कि USD INR ऊपर जा रहा है. That means INR is weak. So weak INR, ये USD JPY भी ऊपर जा रहा है, मतलब जापानीज येन वीक है. तो जापानीज येन का जो वीकनेस है उसको थोड़ा कवर कर लेगा ये दिस INR वीकनेस. सो JPY INR सीम्स टू बी अ बेटर पेयर. इसमें देखिए बैकग्राउंड अभी भी ग्रीन है, whereas USD JPY में बैकग्राउंड we saw turned yellow, which means short trend is neutral. तो INR वीक है, इसलिए इसका बैकग्राउंड ट्रेंड अभी तक न्यूट्रल नहीं हुआ है. सो ये जो आप पोजीशन मैनेज करेंगे USD JPY और JPY INR में, तो यू शुड कीप दिस इन माइंड. नेक्स्ट इज GBP INR. GBP INR is same story. Bearish. INR is weak. So selling GBP against the dollar may be a good idea, but आज का relative strength में INR डॉलर से आगे है. अगर RBI intervention करता है तो INR और नीचे आएगा around that 30 level. RBI is heavily protecting 83.50 in the spot market, और RBI दिसंबर एंड तक एटलीस्ट इसको प्रोटेक्ट करना चाहेगा 83.50. सो GBP INR कुछ शॉर्ट पोजीशन जरूर डाल सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था माउंटेन टॉप. सो माउंटेन टॉप से करेक्शन आ रहा है, सेल कॉल आया है, बट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये देखिए कॉन्ट्रा सेल सिग्नल है. कॉन्ट्रा मतलब अगेंस्ट द मेन ट्रेंड. सो इसमें हम लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि बहुत बढ़िया ट्रेड के लिए कि बैकग्राउंड भी रेड हो. बट एट द सेम टाइम रेनबो का जो मिनिमम क्राइटेरिया है बेचने के, एक फुल रेड कैंडल, दिस इज गेटिंग सेटिस्फाइड. सो GBP INR में भी थोड़ा शॉर्ट पोजीशन बिल्ड किया जा सकता है, बट दैट शुड बी अ पाइलट पोजीशन. और इसका मेन सपोर्ट जोन आ रहा है 103.30. सो मैं थोड़ा तो शॉर्ट पोजीशन डालने की सोचूंगा. आई मेंटेन द स्टॉप लॉस वेल. आई डोंट थिंक बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व ऑन वेडनेसडे, तो थर्सडे से पहले कोई मेजर मूव इसमें हम लोग देखने वाले हैं नहीं. यूरो INR is next. It's bearish. RSI से दिख रहा है it has been bearish. I was short in euro INR, but relatively squared off now. Large position along with euro USD. This can come down a bit further. ये देखिए मेरा अलर्ट डाला हुआ है. So very marginal FOMO similar to euro USD. I'm holding into this one. अभी भी
इंक्रीज करने का कोई प्लान नहीं. वी आर गोइंग इनटू द दिसंबर, हॉलीडे एंड तक आ रहा है, 22 दिसंबर. हम फोरेक्स मार्केट वाले वी गो टू हॉलीडे ड्यूरिंग द क्रिसमस बिग हॉलीडे, सो इट मे गो इनटू दिस कंसोलिडेशन इवन आफ्टर द फॉल. बट अभी भी थोड़ा सिंस फॉल का चांस है, तो थोड़ा मैं जो फोमो पोजीशन है उसको मेंटेन करूंगा. नेक्स्ट विल लुक एट द गोल्ड, इंटरनेशनल गोल्ड. ये मेरा इंटरेस्टिंग लग रहा है. दिस इज द फर्स्ट टाइम I'm getting a signal. This was square of signals. I squared off in trailing stop here in this day. Since that day, I'm zero position on gold. Now, for the first time, I'm seeing a selling chance. Now, this selling chance is a strong as per rule. This is as per, if this close like this, the candle, this it can be a beginning of a new selling chance, and main support region is 1979 and 1968. So selling gold or gold को prefer करेंगे बेचना against the dollar, not against MCX gold. MCX को गोल्ड को नहीं बेचेंगे, गोल्ड इंटरनेशनल गोल्ड. कैसे? MCX गोल्ड को बेचेंगे और USD INR लॉन्ग करेंगे in the right amount. If you are my learner, you already know that how to create the synthetic pairs. So you'll have to create a synthetic pairs कि XAU USD short, not MCX gold short. आप इसके लिए गोल्ड मिनी यूज कर सकते हैं. जो बिगिनर्स है, यू वांट टू ट्राई इट, यू कैन ट्राई इट विद कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड पेटल एंड USD INR. So next is हम लोग will look at silver XAG USD or the international spot CFD silver. Silver, I have been bearish and I shorted silver, you can see as per rule, but large position I have covered last night when almost silver was at the bottom level. The reason is simple, it reached the flat zone. So now I basically want this area to be, I want to see this broken. I also want to see this mountain top to be broken. So I want to place an alert at the mountain top as well. So XAG USD cost crossing 22.34, I will be alerted. Now other two pairs जो इसमें हम लोग देखेंगे, one is pound yen GBP JPY. This can be a new beginning. You can look at the hammer. This is can be a new return as yen is a bit weak. Hide. Now, as per my rule, we are not ready to do anything. But if I look at the candlestick chart, which definitely we should not look at the candlestick with the rainbow, but we can choose. We can simply choose. ऐसे देखना ठीक नहीं. So you can choose the normal candlestick setup choose कर सकते हैं. और उसमें let's look at क्या दिखा रहा है. I can clearly see a hammer. Maybe a bounce back will be there till 183. Or I don't know how far, but this can be definitely a signal. This is a pause. So it's not a buy trend. So that's why my setup is not asking me not to buy. Rather, it's asking me to square off some of the position that I have. There is a turn in the momentum, as I can see. It is reached a very important support zone. So some profit booking rather my setup is asking me to do, rather than asking me to go immediately into buy mode. But somebody who play with the candlestick, this is the opportunity for you into GBP JPY. Let's look at the Euro Yen, Euro Japanese Yen. If you look at the relative strength RSI X of mine, it is a major turnaround. That means there is a pause. There is a pause in the sell-off. It is happening at a very important support zone area. So I expect now in this pair more of consolidation unless we see significant breakdown of 155.4 and also 155. Very likely we'll see further consolidation in Euro Japanese Yen.
So यही था आज का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिपोर्ट. So again to recap, I'm marginally short on Euro USD. I'm marginally short on Euro INR. Can clearly see why. And I entered a short, exited at marginal profit, but now I plan to enter another sort of FOMO in GBP USD, more prone rather than GBP INR, but I'm open to both GBP USD and GBP INR. As INR has strengthened, possibly thanks to Reserve Bank of India intervention. So next, these two are Japanese yen. I'm already short. So with the profit booking signal, I'll consider to square off some of the position. Further, 30% already reduced. I will reduce further around 30-40% and make it the total profit booking to 70% of the position. Gold, I will be looking to add new short position, but on XAU USD, not on direct on MCX gold. To create that, I will short MCX gold and I'll go long on USD INR. But I'll not jump to do that whenever market opens. I'll look at minimum 15 minutes anyway I give to, even if I'm in loss. Silver I was short, still some quantity I'm short. I think I'm not with this level reached, I will be in at the similar profit that I was almost yesterday, or a little marginally higher could be, but I'm not fully sure what I should do here. Should I go for a profit booking, or right now I am not sure on that. I think I'll become more sure as the day progress. But largely I'm holding, majority of the positions are squared off. Some short positions still I'm holding. Euro GBP JPY, I was short, but I squared off it a bit earlier than this move, as I was already short on other pairs. GBP was showing some signs of recovery. So largely GBP at JPY and Euro Yen, I'm currently out of any positions. And with this holiday season approaching, I don't think I'll be building too much into these Euro Yen after this big move happened and it's at a support. सो थैंक यू सो मच. आई होप मेरा जो वीडियो है, ये जो रेनबो यूजर्स है, आप लोगों को हेल्प कर रहा है, और यू आर दिस इज इम्प्रूविंग योर ट्रेडिंग. So all the best from my side on your trading, and all best of luck. If this video is helping you, don't forget to like it और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा for regular update. Thank you.